Yes, ladies and gentlemen, do make sure we are generous so that we add and create impact together. Our next segment, influencer marketing, the most talked about these from the last many years. And for that, I'm going to invite Ravi Keval Ramani on stage along with Mayank Agarwal, Vishwadia, and Bhavesh Kaware. Hello, hi. How are you? Please. Very well, please. We have Ravi Keval Ramani, Mayank Agarwal, Sagar, and Bhavesh joining us. Hello. Hello, everyone. Just a quick introduction. First, I would like to thank NAR for giving us a platform and bringing out a topic which is very important to all of you guys, real estate and influencer marketing. I would like to introduce this is Mr. Mayank Agarwal. He is the founder of Green Cottage. That's Mr. Sagar Visavadia. He's a very well-renowned real estate agent based out of Mumbai. And Mr. Bhavesh Kaware, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन गुरु इनका वीडियो तो आपने 100% देखा होगा in Instagram as well as YouTube, if I'm not mistaken. All right. So without delaying any further, I'm going to ask each one of them a few questions about their journey on social media. And at the end, they're going to ask me a question about my journey on social media. So starting first, my question is to all three of y'all. How did you get started as a real estate social media influencer? And what inspired you to enter this niche? Okay. Mayank. Bravi, firstly, it's an absolute honor for me to be here among all the stalwarts of the industry. Now, coming back to your question, I started my Instagram journey in 2021. I've been in real estate since 2012, and till then we've used the traditional ways of marketing. We've all done telecalling, SMS blasts, Google ads, Facebook ads, right? Also references. But 2020 was a major shift in terms, because COVID happened, right? And a lot of industries were affected because of COVID initially, at least. So that time I saw a rise because I'm a avid user of Instagram, and I saw a lot of people using Instagram to leverage sales, in their business. And it was my wife who sort of pushed me into this journey because she's in fashion, and fashion is one industry where they've absolutely both the juice nikal diya hai in terms of content creation and influencer marketing. So she's like, Mayank, you're so passionate about real estate. Why don't you start a channel on real estate? So I started in 2021, and the main idea was to reduce the customer acquisition cost organically by building your own distribution. Right? How much is it on an average for our public over here? Because I know you do a lot of PPC, Google ke aap ad karte ho. So what is the average acquisition cost and how much did it drop down? Yeah, so first I'll talk about Google. Now, I'd done an ad campaign for a renowned builder in Vadala just before I started my page, and I spent about 3 lakhs in that month for one particular project, and I got 0 sales. And it's like that, because real estate's a big ticket size. You can either get a lot of sales or nothing. So it's go big or go home. So, it's kind of risky to spend on Google, right? Now, in terms of Instagram, even if I'm posting a reel and if I don't get closures, it's absolutely fine because I haven't spent anything to make that reel.
right? So, I mean, coming back to your question, on New Year's, I think I'd gone to Bali with my family, and I just put up a reel about the Bali real estate, right? It was new to me as well, and that reel sort of did 2.5 million views, and we're getting 2 closures from Bali. And the ticket size is about 7 crores, and Bali offers 5% brokerage. So you can do the math, and it's 0 customer acquisition cost. So all that is net profit. I think if I had to do that on Google, it would be significantly higher. All right. Sagar Saab, how did your journey on social media start? Great. So, how are you guys? Great. Kem cho Gujarat? Khammagani Rajasthan? Kasa kai Mumbai? Epate Erikiri? तमिलनाडु? अच्छा मुझे लगता है कि सब लोग वो खाना खा के वो गए एक तो आज क्या मस्त ऊंधियू बनाया था गुजरात का मज़ा आ गया मुझे खा के सो गाइज आई वांट टू आस्क यू यहाँ पे डेवलपर्स कौन कौन है सबसे पहले डेवलपर्स रेज योर हैंड्स अच्छा सब बाहर चले गए कोई नहीं रियल एस्टेट वाले हाथ उठाइए एंड हु आर फ्रॉम अदर सेक्टर्स ग्रेट सो गाइज सबसे पहले इन्फ्लुएंसर जर्नी के पहले व्हाट इज़ रियल एस्टेट वो पता होना ज़रूरी है तभी आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए रियल एस्टेट क्या है ठीक है मेरा नाम सागर विसवाड़िया है माय फर्म नेम इज़ ड्रीम प्रॉपर्टीज आई एम बेस्ड इन मुंबई ओके रियल एस्टेट फॉर मी इज़ तुम धड़कनों का गीत हो जीवन का संगीत हो तुम जिंदगी तुम बंदगी तुम रोशनी तुम ताजगी तुम हर खुशी तुम प्यार हो तुम प्रीत हो मनमीत हो आंखों में तुम सांसों में तुम नींदों में तुम आहों में तुम ख्वाबों में तुम यादों में तुम हो मेरे हर बात में तुम हो मेरे दिन रात में मेरे लिए पाना भी तुम मेरे लिए खोना भी तुम मेरे लिए हंसना भी तुम मेरे लिए रोना भी तुम और जागना सोना भी तुम देखूं कहीं जाऊं कहीं तुम हो वहां तुम हो यहाँ तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं तुम ही मेरा धर्म हो तुम ही मेरा कर्म हो तुम ही इबादत हो मेरी तुम ही तो चाहत हो मेरी तकता हूँ हर पल जिसे तुम ही तो तस्वीर हो तुम ही तो तकदीर हो तुम ही नज़ारा हो मेरा तुम ही सितारा हो मेरा यूँ ध्यान में मेरे हो तुम जैसे मुझे घेरे हो तुम उत्तर में तुम दक्षिण में तुम पूरब में तुम पश्चिम में तुम यूँ पधारे मेरे जीवन में तुम हर पल में तुम हर क्षण में तुम मैं देखता बस तुमको हूँ मैं मानता बस तुमको हूँ तुम ही मेरा रास्ता हो तुम ही मेरी मंजिल हो मेरा सागर भी तुम मेरी साहिल भी तुम ही मेरा धर्म हो तुम ही मेरा ईमान हो तुम ही मेरी जान हो सच कहूँ तो तुम ही मेरा भगवान हो तुम ही मेरा भगवान हो तुम ही मेरा भगवान हो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ तालियां बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन मानता है उनके अंदर दम है रेज योर हैंड्स जिनको लगता है उनके अंदर दम है अमेजिंग तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें खुशी या गम होता है तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है Very nice, sir. Very nice, sir. So, guys, first of all, I am very privileged that I am sitting with Mr. Ravi Keval Ramani, Mayank Agarwal and Bhavesh Kavre. तो इन लोगों को देख के ही मैंने रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट किया था सबसे पहले कोविड में बहुत हालत ख़राब हो गई थी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स का पैकेजेस था मेरे पास सो 6 महीने का कोविड था फर्स्ट फेज उसके बाद मैंने उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि 6 महीना सिर्फ कोविड में चला गया अभी आप मेरा पैकेज 6 महीने का एक्सटेंड कर दो तो उन्होंने बोला नहीं और मेरे पैकेज का इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा का था तो मैंने बोला जब तक मैं पैसा भर रहा हूँ तब तक मेरा पैकेज वहाँ पे दिख रहा है मेरी एड्स दिख रही है लेकिन जब मेरा पैसा ख़त्म हो गया मेरा टाइमलाइन ख़त्म हो गया उसके बाद सारी एड्स गायब तो मैं गुजराती हूँ सस्ते दाम में कैसे अच्छी चीज़ करनी है आपने तो धंधो आवड़े है खाली सो उसके बाद मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे जाते हैं इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करेगा फेसबुक डिलीट नहीं करेगा यूट्यूब डिलीट नहीं करेगा ट्विटर डिलीट नहीं करेगा लिंक्डइन डिलीट नहीं करेगा मैंने सारे पैकेजेस बंद कर दिए और मैंने इसके ऊपर पोस्ट करना स्टार्ट किया पैसा भी बच गया और उसके बाद देखो थोड़ा बहुत आपको इन्फ्लुएंसिंग सीखना पड़ेगा तो मैंने ऐसे करके इन्फ्लुएंसिंग करना स्टार्ट किया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग लीड्स उसमें फिर कन्वर्जन्स होने लगे फिर तो मज़ा आ गया कि भाई बिना पैसा दिए एड्स डाल रहे एंड उसके बाद करते गया और आज मैं थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर पाया हूँ आप लोग इन्फ्लुएंसर से आप मिलोगे ना तो हम लोग आपको ये नहीं बोलेंगे कि फ़ोन मत यूज़ करो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा फ़ोन यूज़ करिए ओपन योर इंस्टाग्राम एवरीवन सारे लोग इंस्टाग्राम में हैं पहले मुझे ये बताइए कौन कौन इंस्टाग्राम पे नहीं है वो हाथ उठाइए सो गाइज प्लीज़ डाउनलोड इंस्टाग्राम अगर और लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं इंस्टाग्राम ओपन करके उसमें डालिए सागर SAGAR VISA
लिखिए सागर साहब इधर ही है आपका. यस It's right here. स्पेलिंग इज @Mumbai Real Estate _ यस नहीं मुंबई रियल एस्टेट अंडरस्कोर एक दूसरा आईडी है, एक सागर विसावाड़िया करे. दिखा आईडी किसको किसको दिखा, उसको सबसे पहले फॉलो कर लीजिए. अभी 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 आप लोगों को मेरे साथ अगर बिजनेस करना है तो मैं सब लोगों को मेरी प्रॉपर्टी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जिंदगी एक खुली किताब है जिसका हर पन्ना आप देख सकते हो. यानी कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी कोई कोई प्रॉपर्टीज जो लिस्टेड है वो आप देख सकते हो एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग टू मेक लाइफ इजी, सुकून वाली जिंदगी. Thank you, sir. Thank you very much. Bhavesh bhai, how did this journey start for you? This journey started, my daddy was a real estate agent, now he's a developer. And I was selling a property through videos, and most of all the leads I was generating from Google, 99 acres, Magic Bricks, housing.coms. ऐसे बहुत से पोर्टल्स थे. उस टाइम बूमिंग मार्केट था, हर कोई ब्रोकर उसे यूज कर रहा था. So my daddy was real estate agent. He was also using that same platforms for generating the leads. But मेरे पास सोशल मीडिया समझने का थोड़ा सा एक ट्रिक था मैं बोलूँगा, और सोशल मीडिया कैसे चलता है, कैसे वर्कआउट होता है, हाउ टू इन्फ्लुएंस, कैसे लोगों तक पहुँचना है और क्या पहुँचाना है, ये सबसे ज़रूरी है. तो जब मेरे डैडी लीडिंग डेवलपर्स के साथ प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे बाय PPC, 99 acres, housing.com, तब मैंने वीडियो स्टार्ट किया. और बेसिकली मेरे डैडी का फर्म है रियल इस्टेट ब्रोकरेज का. आई वॉज टोटली इनटू प्रोडक्शन एंड मीडिया. जब मैं डेवलपर के पास बोलता था कि वीडियो एड्स बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें वीडियो एड्स के थ्रू एक कैंपेन बनाना पड़ेगा, लेकिन तब डेवलपर्स बोलते थे कि एक मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग हो गई, तीसरी मीटिंग हो गई, उसके बाद भी कोई डेवलपर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता था. लेकिन एक फेलो डेवलपर ने तीसरे मीटिंग में मुझे बोला कि भावेश भाई, आप जो कैंपेन मुझे पिच कर रहे हो, आप खुद के लिए क्यों नहीं करते? तो मैंने मेरे लिए एक कैंपेन डिज़ाइन किया, आ जाओ बॉस दिखा दूंगा, और फिर उस कैंपेन ने दिखा दिया. तो आज मैं बोलूँगा कि इन्फ्लुएंस करके मोस्ट ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स जो मुंबई में वर्क करते हैं वो मेरे से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं, और उनकी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में करवाता हूँ सबसे हाईएस्ट ROI देता हूँ. ऐसे स्टार्ट हुई मेरी जर्नी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में. Thank you, Bhavesh bhai. मेरे को क्वेश्चंस आते हैं. अभी वेब जब सब नेटवर्किंग हो रहा था कल, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो पूछते हैं कि आपने वीडियो तो डाल दिया, इंक्वायरीज भी चलो समझो आ गए, लीड्स भी आ गए, लेकिन उसका कन्वर्जन रेट जो बोलते हैं वो कितना है, ये सब जानना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम मयंक एज वेल एज फ्रॉम भावेश भाई. आप लोग कॉन्स्टेंटली डालते रहते हैं. मयंक इज मोर ऑन एन एजुकेशनल साइड, आपका सेल्स ओरिएंटेड होता है मेरे जैसा. तो सर जो लीड्स आते हैं उसमें से कन्वर्जन कितना होता है, और आपका टिकट प्राइस जो सेल्स प्राइस होता है हर फ्लैट का कितना होता है? ऑन एन एवरेज मैं स्टार्ट करता हूँ 25 लाख से और लेके जाता हूँ 5 करोड़ तक. मतलब ROI अगर मैं बोलूँगा कितना आता है तो मेरा एक अलग लॉजिक है. मैं एक कस्टमर को 100 प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, एक प्रॉपर्टी 100 कस्टमर को दिखाता हूँ और माल बिक जाता है. सर कितना, समझो कि एक प्रोजेक्ट लिया आपने अभी कांजूर मार्ग और आप वो एरिया में करते हो इन मुंबई, तो ऑन एन एवरेज एक महीने में आप समझो या 3 महीने में, इन अ क्वार्टर, आप कितने यूनिट्स बेचेंगे 50 से 1 करोड़ के रेंज में? 1 बेडरूम 2 बेडरूम जो भी रहे. ऐसा एवरेज तो नहीं निकाला मैंने, लेकिन पिछले साल में मैंने इन्फ्लुएंस करके मोर देन 500 प्रॉपर्टी बेच दी है. That's brilliant. That's brilliant. तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं कि ये इफेक्टिव है कि नहीं, उसका आई थिंक सब लोग को जवाब मिल गया. इज दैट करेक्ट? गुड गुड. मयंक. Okay, so in terms of my first company is the Green Cottage, which is a brokerage firm into primary transactions, and the second is EdState, which is an edtech platform for real estate. I'll talk about Green Cottage conversions through Instagram.
Now, I think, at least for us, when we do normal ads, my leads to closure ratio is about 2 to 3%. 2 to? 3%. Okay. Normal ways. You know, if you do an SMS blast, you get, say, 100 leads, out of which, you know, I would assume that 15 would come for a site visit and then probably 2 to 3 will close. Also, it depends drastically on how good or bad the project is. But assuming you've picked the right project, I would say in traditional, you know, ways of marketing in real estate, at least for us, we get about 3% closure ratios. Now, coming to Instagram, my conversion ratio of my Instagram leads is as high as 60%. 60. Yeah. So if we get 10 leads, they're highly filtered because they're pull leads, Okay. right? The client is messaging me first. Okay. He's like, Mayank, we are looking for a property in Bombay. Can you help us? And that goes into my sales funnel. So if we get 10 leads, assuming 10 qualified leads, we tend to close 6 out of 10, All right. which is you know, as high as, you know, a reference, right? If you get 10 references, you'll end up closing 5 or 6. Correct. Yeah. All right. Pretty high. Ravi bhai, you also have to tell the ratio of lead नहीं सर, conversion मेरे ratio. पास दूसरा क्वेश्चन है सर. नहीं नहीं, आप कितना कमाते हो जनता जानना चाहती है. कौन कौन जानना चाहता है आरके रियल्टर्स कितना कमाते हैं? देखिए हाथ Sir, उठ गए. next question to you, sir. आप मेरे लिए sir, what I want to know is आप on what platforms you are on? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter. आपने बोला था. और what is the most lucrative? What is the most successful platform जिस पे आप हो? Timer उधर है sir. सो गाइज मैं हर जगह प्रमोट करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड मैं आप सुन के शॉक हो जाओगे, मैं लिंक्डइन से भी लीड्स जनरेट करता हूँ, मैं ट्विटर से भी लीड्स जनरेट करता हूँ, मैं फेसबुक से भी लीड जनरेट करता हूँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा. तो वहाँ से भी मुझे लीड्स आते हैं, एंड वहाँ से जो सबसे लुक्रेटिव है, ये आप सुन के शॉक हो जाओगे, लेकिन फॉर मी इट्स फेसबुक. Okay. You know, I'm getting a lot of leads from Facebook क्योंकि I feel maximum जो एज ब्रैकेट है 40 से लेके 60 का जो बहुत सारे लोग बाय करते हैं, लग्जरी सेगमेंट, आई एम इनटू लग्जरी सेगमेंट. 40 से 60 का जो एज 40 से 60. ये 40 से 60 लोगों का, वो मैक्सिमम लोग फेसबुक पे है. एंड धीरे धीरे इट्स शिफ्टिंग, बट या यू कैन टारगेट ऑल द सोशल मीडिया साइट्स एंड स्टार्ट प्रमोटिंग. एंड यू नो, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बोलते हैं अरे हमसे ना हो पाई, मेरे को तो आता ही नहीं है सोशल मीडिया. तो सीखे, यू नो, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा. यू नो, एक कहावत है, सूरज को अपने लिए अपने आप को जलाना पड़ता है तभी वो चमकता है. तो उसी तरीके से अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको बदलना पड़ेगा. यू नो, सो दिस इज द हाउ वी कैन डू. So in fact जो आपने पॉइंट बताया था, मेरे को मयंक भाई को पूछना था कि मयंक, पहले आप इंस्टाग्राम पे यू आर अ कैमरा शाई इंडिविजुअल, which you have very clearly told me. So me and Mayank go a couple of years back. तो एक बार बातों में मयंक ने मेरे को बोला कि I am camera shy. So how did you overcome that? Because a lot of people over here would like to be on social media, but they are not able to for whatever reasons. थोड़ा shy है, trolls आते हैं और लोग गलत बोलते हैं, criticism आता है. How was your journey from off camera content to on camera and then dealing with the trolls? So in terms of trolls, we've been very fortunate. We've not been trolled, right? Probably one odd random comments here and there. But in terms of being camera shy, now see, this will happen only gradually, right? I can tell people that don't be camera shy, but it'll just happen gradually, right? So initially when I started, when I look back at the first 5 reels I had made, they were pretty hideous. You know, it was just my finger and I was just pointing at buildings. And obviously then, after a week, I sort of mustered up the courage and I just started. Of course, it took a lot of retakes and retakes. Now, the beauty of Instagram is you can edit, post-production can sort out a lot of things. So eventually it just happened after a week or two. I just, came in front of the camera and thank God I did. So you mentioned about EdState. In your EdState, which is I think an online portal where you have a whole exclusive content for learning real estate, do you also have any kind of a social media course on it? Or what can people learn on your platform? Yeah, so EdState is basically an edtech platform specifically designed to make real estate courses. It's a launchpad for every real estate individual. We have a 1-year flagship program in real estate.
And of course, even we have a page, a separate company page on Instagram for that as well. So of course, we get a lot of closures through that Instagram page as well. Now, just going back, I forgot to finish one point, is that China has banned Facebook, all right? So if you look at in Instagram, India contributes to 516 million users for Instagram. That is close to 52 crores individual use Instagram in India, which is the highest in the world. To put, perspective, America's entire population is 350 million. 330. Right? And India has 516 million Instagram users as of 2023. 1.5 times. Right? So I think everyone should probably take advantage of that. So my next question, based on this point, is to Mayank and Bhavesh bhai. Y'all do a lot of collaborations on Instagram with developers, ठीक है? What are the difficulties आप फेस करते हो जब कोई डेवलपर आता है हमको कोलैबोरेशन करना है? एक वो मेरा क्वेश्चन था आप दोनों से, और दूसरा मुझे पूछना था कि डेवलपर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे क्यों एडवर्टाइज करे जब उनको न्यूज़पेपर है, उनको होर्डिंग्स है, उनको मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स है. Instagram versus all other platforms of advertisement, why should they go for that? My question is the two of you. Right. So I'll just be very quick because we're running out of time. The first question is, so we don't accept every collab that I get. We do a thorough research on the builder, on the possession timelines. I'm more cautious of under construction projects. And we've rejected a lot of collabs as well where we think something is fishy, right? Because it's our responsibility I don't want anyone to buy a property because I've shot an ad on it, right? That's number one. Number two is, compared to traditional print media, the issue has always been it's very hard to measure your success ratio, right? Cost of impressions you cannot measure on a billboard. You still can't tell me how many views the newspaper ad has given you. You can only talk about the circulation and the number of cars passing by. Yes, but you can't say how many people have looked at that billboard. However, when you look at digital mediums, you can track everything from the cost, your impressions, the number of views, impressions, likes, comments, the engagement. You can also track the average time, of the reel. For instance, if you posted a 30-second reel, Correct. you can also track how many seconds has a viewer seen that reel. Correct. There's just so much data and it's just way more efficient. And then accordingly, you can plan your next campaign in terms of budgeting. All right. Bhavesh bhai? Basically, there are developers जिनको collaboration करना है हमारे सबके साथ. हाँ जी. आते हैं मेरे पास मेरी मीडिया कंपनी, प्रोडक्शन कंपनी में कि भावेश भाई कैंपेन बनाना है, ये सब इन्फ्लुएंसेस चाहिए. और स्पेशली उनको वही इन्फ्लुएंसर चाहिए जो रियल इस्टेट में माहिर है. और रियल इस्टेट में जो माहिर इन्फ्लुएंसर है उनको पता है कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है. और रही बात जो रियल इस्टेट एजेंट है उसको मालूम है कि एक्चुअल में बेचना क्या है. ओके. और जो इन्फ्लुएंसर आउट ऑफ रियल इस्टेट है उसको रियल इस्टेट की नॉलेज नहीं है, सो वो तैयार हो जाते हैं कैंपेन के लिए. हाँ चलेगा, दे दो, चेक दे दो, कैंपेन हो जाएगा. लेकिन जब बात रियल इस्टेट इन्फ्लुएंसर्स के साथ आती है, आपके साथ भी काम चल रहा है, आपके साथ भी काम चल रहा है, सो हम कोई भी डील, कोई भी डेवलपर जिसमें फिशी लग रहा है कि नहीं भाई इसने डेवलपर ने डीले पोजीशन करवाया है, ब्रोकर के साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया है, तो पता ही चल जाता है. मार्केट में काम करने से पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है. और रही बात सोशल मीडिया पे डेवलपर्स को आने की, तो सोशल मीडिया में अगर आना है तो ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी. सोशल मीडिया में ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई कमेंट सेक्शन पे कुछ भी लिख सकता है. बिल्कुल सही है वो तो डेवलपर वही डरता है जिसके पास खोट है. Correct. जो डेवलपर एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करता है, भावेश भाई उनके कैंपेन बनाता भी है और भावेश भाई ने उनके साथ काम भी किया हुआ है. आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो. डेवलपर्स जो ऑन टाइम पोजीशन देते हैं, डेवलपर्स जो ब्रोकर्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है. Thank you, Bhavesh bhai. रवि भाई,
I wanted to ask you that what is your message for the audience and So, for the influencers? I don't know, it says Lal mein idhar bol raha hai, time's up. Three of you all would have to ask me a question, I'm sure. Yeah, so I'm asking you हाँ. that यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, what is your message for them? For those who are not on social media, who do not market, who still they are using online portals. जैसे अभी मुझे मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे 2 से 3 ऑनलाइन पोर्टल्स का फ़ोन आया और लिटरली मैंने उनको कंफर्मेशन दिया. उन लोगों ने बोला सागर भाई क्या हम आपका वीडियोस यूज़ कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं बोला ये आ गए ये लोग, इसे कहते हैं करारा जवाब मिलेगा. तो वो लोग मेरे पास आए थे क्योंकि वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं. वो लोग सोशल मीडिया का हमारा वीडियोस उसके ऊपर डालेंगे. तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? और एक सवाल है कि हम रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स है, आपने हमसे सवाल पूछे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर बनने का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. सर आप तो गूगली मार देते हो यार. एडवांटेज ये है कि यू गेट टू रीच एवरीवेयर. पूरी दुनिया खुल गई है. उधर पीछे क्राउड में एक मनोज सोलंकी साहब बैठे हैं, वो मेरे लिए दुबई मैनेज करते हैं. उनको मोनाको से एक F1 रेस कार ड्राइवर का फोन आया फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई. दूसरा, नार एसोसिएशन इज देयर फ्रॉम द US. There is a realtor coming down from Florida, Biscayne Street in Miami. He's going to go meet up with Mr. Solanki in Dubai, and we are trying to do a collaboration so that we can sell Dubai properties to people in Miami. So, ये एक दुनिया खोलने वाला प्लेटफॉर्म है जहां वीडियो जब गया, whether YouTube हो या Instagram हो, तो सब लोग देखते हैं. So that is one big advantage. The second disadvantage part, मुझे नहीं कोई disadvantage दिखता है. Disadvantage ये part है कि आपको एक thick skin individual होना पड़ता है, because उधर जब material जाता है, जो video जाता है, तभी लोग कुछ भी बोलते हैं. तो अपना एक स्किन थिक होना चाहिए. और अगर आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हो तो आपका दिमाग शातिर होना चाहिए, आपका दिल शेर का होना चाहिए, और आपका जो स्किन है वो थिक होना चाहिए. नहीं तो आप ये इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. तो रियल एस्टेट और सोशल मीडिया को तो साथ में होना चाहिए. एंड टू कम टू योर क्वेश्चन, we're completely gone on time, but quickly to answer your question, Sagar, if someone wants to use my material, my video, my face, gladly use it. These are my charges. Pay me and take the material. Simple. पैसा दो, काम करो. बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है उसका. एंड एडवाइस टू रियल एस्टेट एजेंट्स ऑल अक्रॉस इज डरो मत, जाओ, पोस्ट करो, घड़ी घड़ी पोस्ट करो. पहला वीडियो नहीं गया, दूसरा वीडियो नहीं गया, तीसरा वीडियो नहीं गया, 10वां वीडियो जाएगा, 50वां पोस्ट जाएगा, लेकिन वो जाएगा और वो क्लाइंट को पहुंचेगा. एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी परसिस्टेंट, एंड यू जस्ट गॉट टू कीप डूइंग इट. नाइकी बोलता है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. Simple. Brilliant. Agarwal sahab, one last question, and then if we have permission, Ravish bhai, we can take a couple of questions, or we don't have permission. Can we take one? All right, but Agarwal sahab. My question to you is, of course, you're all over the place, right? You're doing Bombay, or Mumbai, you're doing Goa, you're doing Dubai, and of course, you're influencing as well, right? So how do you manage, it's like you have two personalities, right? And I've seen that. A is in front of the camera, and B is, getting the closures done. How do you manage both in terms of timing? Do you have any content strategies? Like what's your modus operandi? Mil baat ke kaam karo. I have a social media team. I have a sales team. I am expanding my team, and my time is managed by me very exclusively on a very strict routine. Everything that I do goes on my calendar. If it's not on my calendar, I do not meet you, I do not talk to you. You have my phone number, and I love to talk to everyone. मैं ऐसा इंसान हूँ जो मुंह खोलता हूँ तो बंद ही नहीं करता हूँ, बोलते रहता हूँ. तो but I do curb my time, and I have a family, I have my child. So
1 week in Goa, 1 week in Mumbai, 1 week in Dubai, back in Mumbai. Then I have my meetings, I have my closures, a lot of Zoom calls. I use technology to my benefit, and I think all of us should also use it, whether it's Zoom call, Google Meet, AI, BI, CI, whatever is there, use everything possible in your arsenal to make sure you get what you want for yourself, for your team, and for your family. That is my answer. Awesome. Always. So can we How have a many question? questions do we have, No, Ravish I bhai? don't think we are taking any more questions. If you have questions, Yeah, one one. more? Okay. Just one. All right, go for it. So, my name is Kshitij Nagpal and I'm from Delhi, APP. So, my folks also want to know, and so do I, that we've been working hard traditionally, the traditional way, going to the client, making him come, taking him around and showing him a lot of properties which he might not be interested. So, you guys work on a very blunt model. You guys what? On a very blunt model. Blunt. Yeah. Okay. That you charge for things and you interact only with people who are on your calendar. We are not as organized. So what precisely I want to know is how many properties do you market at once on Instagram, Facebook, and other factors that you told me? And what is the kind of team that one should have if you're doing a 15 property campaign? So what is the quantum of support that you need and what do you expect? This question is for? All of you. All right. Mayank? So I think there were 3-4 questions you asked, right? So the first question is in terms of your team size. That only and only depends on you, like how much you want to expand, right? I suggest do it slowly and steadily. I think the main issue in real estate, because the ticket size is so huge, your conversion ratio always going to be very less. The success ratio in terms of in terms of leads. It's very important for you to train your sales staff. We call this suspecting and prospecting in sales. It's time that we as real estate agents reject clients, because you should have the knack to know who is kind of qualified to buy and who is not qualified to buy. Because when I had started in 2012, I used to go at every lead possible. I used to get so excited, oh, this guy wants to buy. And then over a period of years, I realized that that guy was never qualified to buy. He's not the decision maker. He's never going to end up buying a property. So we tend to respectfully reject those leads. That will drastically improve your efficiency and your sales process. So I think start qualifying clients the right way. Thank you. Sagar bhai? So my question still is unanswered. Vis-a-vis the Traditional- number of properties that you want to market, what should be the number of employees that you should have to support? So I would Such say sales. real quickly, like at least 2 people per property, or you can do it pin code wise. That's what I wanted to know. Yeah. Thanks. So, traditional way of marketing is obsolete now. पहले के ज़माने में लोग न्यूज़पेपर में एड्स दिया करते थे. They shifted. So, आज आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा. And come on social media. जो ट्रेंड है, every decade के बाद ट्रेंड चेंज होता रहता है. तो आपको ट्रेंड चेंज करना है. And you use technology जिससे आपका, जैसे उन्होंने बताया कि आपका मैन पावर कम हो जाएगा. And yeah, you can go with it. Social media is the way. Thank you very much. Hello, Aapko- hello. One more. Sir, One more, sir, one we are more, please. absolutely and completely out of time. We हम can लोग नीचे ask मिलेंगे- these questions Ravi. during the break. Hi, Ravi. Hi, Ravi. Sir, This is- sir, we'll meet you one- down and we'll have a conversation. We need to leave the podium for the other guests, please. We'll just come and meet up with you down. Thank you very much. Thank you so much. In fact, I wanted to tell you, Ravi ji, that I did a podcast with Bhavesh, and we did a topic called renting versus buying. And we did a topic, one more topic called redevelopment and the Dharavi project. All the podcast reels went viral and hit like 3 million views. So I truly believe in the power of collaboration, and what the session that you all had on collaborating together, I think will really help you quadruple your business. So thank you so much. Give them a round of applause. And I would now request Mr. Mehul Vitlani, Director, West Zone,
NAR India to please step forward. And please go ahead and felicitate our influencers.